ऑलराइट, तो क्या सीखा हमने? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. So unit of pressure will be what? It will be Newton upon meter square. Unit of force upon unit of area. And it is denoted as N upon M square. Newton per meter square is also known as Pascal. ये Pascal word कहां से आया? Because of a famous scientist, Blaise Pascal. ऐसा एक साइंटिस्ट था, उसको रेस्पेक्ट देने के लिए दिस यूनिट हैज बीन मेड. फोर्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रस्ट. मीनिंग सेम है फोर्स एंड थ्रस्ट, लेकिन थ्रस्ट वर्ड इज यूजुअली यूज्ड व्हेन वी डिस्कस अबाउट प्रेशर एंड इन फ्लूइड्स. इस बाटली के बारे में एक चीज आपने नोटिस किया? डिड यू नोटिस दैट इट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर? लिटिल स्पेस इज एम्प्टी इन द बॉटल, राइट? ये बॉटल का टोटल वॉल्यूम इज 2 लीटर्स, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल. लेकिन इसमें जो पानी है ना, दैट इज ओनली 1.7 लीटर्स. और ये बॉटल प्लास्टिक का है ना, सो वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल वी कैन इग्नोर. With water, the mass of the bottle is how much? It is 1.7 kg. So this 1.7 kg is nothing but mass of water only. क्योंकि बाटली का वजन हम इग्नोर करते हैं. So what is density? Density, which you have studied in your lower class, which you have studied earlier, it is mass upon volume. Mass divided by volume. Over here it will be 1.7 upon 1.7. That is 1 kg per liter. Mass upon volume है ना, इसलिए kg upon liter आएगा. ऐसा यूनिट में density of water is 1000 kg per meter cube. Because 1 meter cube is 1000 liter, so 1000 liter पानी का वजन 1000 kg रहेगा. So in SI unit, density is 1000 kg per meter cube. हाँ, देखो मैंने क्या किया. I emptied the water bottle in this bucket. In this bucket, इस बाल्टी में पहले से ही पानी था और ये पानी और पानी मैंने डाल दिया उसमें. Now the bottle is empty. Have you ever tried to push the water bottle inside the bucket like this? कोशिश किया रहेगा आपने. What happens at that time? Obviously, water level will rise. पानी का लेवल बढ़ जाता है because of the bottle. And second thing, ताकत लगा के पकड़ना पड़ता है, right? जोर लगाना पड़ता है in the downward direction. Reason being, we experience a force in the upward direction like this. बाटली के ऊपर धक्का लगता है, ऊपर की तरफ. We have to apply a force against this force. और वो जो ऊपर वाला force है, which is pushing the bottle upwards, it is known as buoyant force. Buoyant force is also known as upthrust. And let me tell you one thing, upthrust or buoyant force is not something which only water applies. Any fluid you take, oil, kerosene, petrol, कुछ भी, it will apply an upthrust or a buoyant force on any object which is there inside it. इस बाल्टी के अंदर दूसरा कोई लिक्विड भी डालेगा, then also this bottle will experience an upthrust. And not only on bottle, any object which is there inside this fluid, that will experience an upward force like this. And this tendency of any fluid to apply an upward force or an upthrust is known as buoyancy. Buoyancy is tendency को बोलते हैं. चलो अभी मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट ट्राई करता हूं. I will insert an iron block in this bucket. What happens to the iron block? लोहे का पत्थर जैसा चीज, it sinks. डूब जाता है ना बाल्टी में. क्यों डूबता है? Because density of iron is more than density of water. Any object which has got greater density than water, that will sink. अब ये लकड़ी का ब्लॉक, वुडन ब्लॉक डाल दिया मैंने. What happens to this wooden block? It floats on water. Reason being, density of wood is less than density of water. Any object which has got lesser density than the fluid, that will float on that fluid. So generalize हम ऐसे कर सकते हैं. Density of sinking object, any object which sinks, it is always more than the density of the fluid. And density of any floating object is always less than density of the fluid. This principle is applicable in any fluid, not only water. And one more thing, एक और चीज याद रखना, when I say fluid, it means liquid as well as gas. Gas में भी यही principle applicable है. Now see, air is a gas. So do you think this is possible in air also? Yes, very much possible.
जो चीजें नीचे गिरते हैं ना, दे ऑल आर हैविंग डेंसिटी मोर देन एयर. If we take any object or anything which has got density less than air, then what will happen? जो चीज हवा से भी हल्का हो, उस चीज के साथ क्या होता है? याद आया कुछ? हाइड्रोजन बलून. देखो इस बच्चे ने कैसे उस बलून को कस के पकड़ा है, फिसल निकलना नहीं चाहिए इसलिए. What will happen if that child leaves the thread? फुगा ऊपर चला जाएगा, राइट? और बच्चा रोएगा. The balloon doesn't fall down, it goes up. आकाश में चला जाता है. Reason being, hydrogen is there inside the balloon, and hydrogen is lighter than air. Any gas which is lighter than air, it rises upwards. If you fill a balloon or any light container with that gas, then that container goes upwards. Okay, अभी मुझे एक बड़े बाल्टी के साथ खेलना है. So back to my bucket. Ha ha ha.